Hi everyone, I welcome you all. Today I'm going to share this red lip look with all of you, which makes everyone look pretty effortlessly. So without any further ado, let's get started. So बेस के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर के साथ स्टार्ट करूँगी and since I have combination skin, I prefer to use primer water and not the silicone based primer. And please keep in mind that you should keep a distance of at least 8 inches between your face and the primer. देन फाउंडेशन में यहाँ पर कलर बार का यूज़ कर रही हूँ. आई एम टेकिंग अ बिग पम्प ऑफ इट एंड टेकिंग इट एट बैक ऑफ माई हैंड एंड आई एम ऑल्सो मिक्स क्लियर लिक्विड हाइलाइटर इनटू इट. इसको अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे फेस पे मैं इसको लगा रही हूँ डॉट इन मोशन में. Then I'll be blending it nicely with the help of a damp beauty blender. लिक्विड हाइलाइटर्स को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि इनका बेस क्रीम होता है, सो विच इज़ नॉट गुड फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. For concealing my pimple scars, I'm using LA Girl concealer in the shade Natural, and then I'll be blending it with the same beauty blender. For highlighting my higher points of face, I'm using LA Girl concealer in a lighter shade and I'm applying it on bridge of the nose, under eye area, chin area, eyebrow area, and then I'll be blending it. For eyes, I'm using Sephora Beauty Eyeshadow palette and I'm using these two shades as transition shades and blending it with the help of blending brush. इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों आइज़ में आई शेडो इक्वली अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए. इस चीज़ के लिए आप बार बार मिरर में देखते रहिए कि आपका आई शेडो इक्वली ब्लेंड हुआ है कि नहीं और उसको बराबर करते रहिए. अब मैं शैम्पेन गोल्ड कलर ले रही हूँ अपनी लिड एरिया में अप्लाई करने के लिए क्योंकि मैं हल्का सा आइज़ को शिमरिंग इफ़ेक्ट देना चाहती थी. अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी पूरी आइज़ पर टू गिव अ डिफ्यूज्ड इफ़ेक्ट. अब मैं लोअर लैश लाइन एरिया पर भी अपने आई शेडो को थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी. अब चलते हैं हाइलाइटिंग की तरफ. हाइलाइटिंग के लिए इस बार मैंने मिलानी का स्ट्रोबलाइट यूज़ किया है. इसको मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज़ किया है एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद इट बिकॉज इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं.
एंड प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। एंड अगर मैं कलर की बात करूँ तो द कलर विच आई एम यूजिंग दैट इज़ आफ्टरग्लो। इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर इंडियन स्किन टोन फॉर मीडियम टू लाइट। Now for eyeliner, I'm using Forever 52 sketch eyeliner. If you're someone who struggle with making wings और आप eyeliner लगाने सीख ही रहे हैं तो समझ लो ये eyeliner आपके लिए ही है, क्योंकि sketch eyeliner की grip होल्ड करना बहुत easy होता है और ये easy to use भी होते हैं। तो I would suggest if you're someone who is beginner, definitely go for sketch eyeliner। और यहाँ पर मैं अपनी अपर लैश लाइन को बस आउटलाइन करके पतला पतला और विंग्स स्ट्रेच कर रही हूँ, सिंपल। अब ब्लश के लिए मैंने मेबलिन का फिट मी ब्लशर लिया है। इसको मैं ब्रश की हेल्प से अपने चीक एरिया पे लगाऊंगी। और अपने फेस को स्कल्पटिंग इफ़ेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे रिमेल का ब्रॉन्ज़र यूज़ करूँगी। इसको मैं अपने कॉन्टूरिंग पार्ट्स पर लगाऊँगी और इसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। Now for lips, I'm using a lip liner that is Wet n Wild lip liner. जनरली मैं अपने लिप्स पर पहले लिप लाइनर लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये अच्छा बेस दे देते हैं लिपस्टिक को लगाने के लिए, क्योंकि इससे आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाती है एंड ईजीली फेड आउट नहीं होती है। सो ऑलवेज़ प्रेफर टू यूज़ अ लिप लाइनर बिफोर लिपस्टिक। And for lipstick, I'm using Nykaa's Matte to Last lipstick in the shade MumTaj. It's a beautiful red color. मैंने अपनी लोअर वाटरलाइन पर स्किन कलर का कोल पेंसिल यूज़ किया है। I used it because I wanted to give an illusion of bigger eyes. And for mascara, I'm using Sephora's mascara. Mascara को हम wiggle back and forth motion में लगाएंगे both upper and lower lashes पर। मैंने अपने फाइनल लुक में वॉल्यूम ऐड करने के लिए अपने लैशेस में फॉल्स आई लैशेस भी लगाए हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।